Assalamu alaikum and hello everyone. I am Dr. shazafmasood सिद्धू. मेरे जो कुछ पुराने सब्सक्राइबर्स थे उनको तो पता ही होगा that I used to make daily blogs related to health, related to research, and also some of my personal daily fun-loving activities that I would like to share. तो इट्स बिन अ वाइल कि मैंने कोई एक्ट ब्लॉग बनाया नहीं, दैट कोई वीडियो नहीं आई. द रीज़न वॉज दैट ऑब्वियसली few old subscribers would know that I have recently been blessed with a baby girl and I was enjoying my gestation period. So alhamdulillah it went smooth and my baby is doing well as well. So जितनी भी लेडीज़ हैं उनके लिए ये ब्लॉग में स्पेशली इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ आज, सो दैट कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ फ्लॉज रह जाते हैं, जो कि बाद में आपको रियलाइज़ होता है, ये रिग्रेट होता है दैट हाउ आई विश दैट हाउ यू विश दैट इन योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप ये चीज़ें ना कर रहे होते या फिर आप ये चीज़ें कर रहे होते. सो कभी कभी देयर नीड्स टू बी अ राइट गाइडेंस जो कि आपको ये बता सके या आपको हेल्प कर सके दैट हाउ कैन यू एक्चुअली एंजॉय योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर. सो टुडे विल टॉक अबाउट द डूज एंड द डोंट्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. Being a doctor myself and also as somebody who has recently undergone this experience, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये हम सबसे पहले डूज को कवर करेंगे. When you know that you are conceiving and जब आपने घर पे एक यूरिन स्ट्रिप टेस्ट किया है, सो मेक श्योर दैट आपने टाइमली बीटा HCG फॉर यूरिन यानी यूरिन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी किया हो, और आपने टाइमली दैट इज़ ऑन द अराउंड 4th वीक एंड द 5th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी आपने अपना राइटली अल्ट्रासाउंड किया हो. So this is very important that you cannot just rely on your urine strip test and consider yourself as somebody who is expecting, because sometimes a strip test can turns out to be false negative and false positive, and this is another topic that we'll discuss later. But the important thing is to tell you that the sensitivity of the strip test is not that reliable. So the higher sensitivity rate for the diagnostic test of pregnancy is the beta HCG for urine. तो आपने pregnancy test for urine करवाना है for confirmation. And before you're conceiving आपके important चीज़ें हैं कुछ जो ध्यान में होनी चाहिए. For example, if you have some comorbids like hypertension, diabetes, heart diseases, tuberculosis, or any other underlying severe comorbid or a lethal ongoing disease, malignancy or anything, any severe disease जिसके लिए आप अभी कोई अंडरलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो ट्रीटमेंट राइटली आप डॉक्टर से कंसर्न करें, बिकॉज टू गेट योर सेल्फ प्रेगनेंट और to conceive a baby, you need to know that there are only certain medications that are allowed in pregnancy, and you cannot have all the medications regardless कि आपकी कोई भी बैकग्राउंड डिजीज़ चल रही है. कुछ ही ड्रग्स होती हैं जो कि आप प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक योर जनरल फिजिशियन ऑन द लूप एंड साइमल्टेनियसली विद योर gynecologist, ताकि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच मिल सके. सो एक तो बात ये हो गई. दूसरी बात ये कि नाउ दैट यू नो दैट यू गॉट योर let's say strip test done at the home, and then you got it confirmed that you've got a good news, you're expecting. Now what to do and what not to do. So the 9 months of the pregnancy जो है वो 3 trimesters में divided होती है. We have first trimester, that is the first 3 months, second trimester 4, 5, 6 months, and then the last trimester 7, 8 and 9 months. Each trimester has its own precautions, has its own pros and cons to look after, and has its own little details जिनके बारे में एक इंसान को काम करना होता है. The first trimester is very very crucial, very very important. Why? Because the baby's organs development takes place. तो जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनोजेनेसिस यानी हमारे टर्म में बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, आम अल्फाज से बोला जाए तो बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन बनने का जो अमल होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरू के 3 महीनों के अंदर हो रहा होता है. एंड दैट इज़ वाई
एक औरत को ये बताया जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की इम्पोर्टेंस क्या है और आपने किस तरीके से अपनी केयर करनी है. सो अब हम बात करते हैं उन चीज़ों के ऊपर जिस पर हमने काम करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक श्योर दैट योर जनरल फिजिशियन इज़ ऑन द लूप. सेकेंड, स्टे हाइड्रेटेड एट ऑल टाइम्स सो दैट यू आर नेवर डिहाइड्रेटेड. आप कभी भी किसी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को फेस ना करें एंड योर बेबी स्टेज सेफ. सेकेंड, please avoid excessive of caffeine, cold beverages and junk food. So this is very important. Caffeine का intake जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं उनके लिए this is very important to know that excessive caffeine for a baby is harmful. Third and the most important thing is do not overburdenize yourself. Doctors do tell you stay active. But that doesn't mean that stay hyperactive. Sometimes people misinterpret और for example मैं अपनी example दूँ तो मैं बहुत passionate, overworked इंसान हूँ by personality. But I need to understand कि जब मैं भी इस फेज से गुजर रही थी तो I told myself that I have to be a little slower at my own pace. Not that कि मुझे active नहीं होना है. मैं अपने सारे काम खुद कर रही थी. आई वॉज लुकिंग आफ्टर माई होम, माई वर्क एंड एवरीथिंग एल्स. आई वॉज ऑन कॉल्स टू एंड आई वॉज मैनेजिंग द वर्क एंड द होम लाइफ टुगेदर. बट आई मेड श्योर दैट आई स्टेड हाइड्रेटेड. या मैंने ओवर वर्क ना किया हो या कोई एक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स ऑफ न्यू एक्सरसाइजेज ना लिए हों. या अगर आप योगा करते हैं तो आपने कोई न्यू योगा टिप्स ना फॉलो करने शुरू कर दी हों. तो जो आप डेली लाइफ में कर रहे होते हैं यू जस्ट डू दैट. डू नॉट मेक योर सेल्फ ओवर बर्डनाइज कि जिससे आप थक जाएं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टे एक्टिव. डू नॉट जस्ट लाई डाउन या आप लेटे रहें बट डोंट ओवर बर्डनाइज योर सेल्फ. देन कम्स टू द पॉइंट कि आपने जब हम कह रहे हैं कि बेवरेजेस, कोल्ड बेवरेजेस को अवॉइड करें, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल ऑफ दीज ड्रिंक्स, उसकी रीज़न ये है दैट यू आर एट द रिस्क ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़. एंड पीपल हु हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है तब भी यू आर इवेंचुअली एट द रिस्क इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर टू द सेकेंड ट्राइमेस्टर. जो 20 वीक्स शुरू के होते हैं उसमें आप एट रिस्क होते हो. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आप कहीं भी कोई भी ऐसी बदपरहेज़ी ना कर रहे हो खुद के साथ. चाय में ज़्यादा चीनी डालना या फिर एक्सेसिव शुगर्स एंड कार्ब्स का इंटेक करना जो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ में लैंड कर दे. तो some other day we'll also discuss about gestational diabetes, but for now you need to understand that do not use excessive carbs and excessive cold beverages. Then obviously in our culture it's not very well practiced. ऐसा तो नहीं है कि हर तीसरा बंदा इधर स्मोक कर रहा है, but again we as a doctors need to tell you that you should stay away and say a big time no to smoking, alcohol and any other laxatives too, because like we said for the first 3 जो months होते हैं वो बेबी की डेवलपमेंट में होते हैं, उसमें अपने laxatives को भी अवॉइड करना है. फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव ऑफ ग्रीन टीज़, you must avoid all these laxatives. फिर उसके बाद हम कहेंगे eat healthy. So when we say eat healthy, that does not mean that you need to eat a lot. Eat in the little chunks. Eat fresh home cooked food. बाहर का भी आप खा सकते हैं once in a blue moon for the better taste. I'm not saying a big no to pizzas and all. मैंने भी खाया है and you should also try. But then there has to be a limit. Like we said कि even आम हालात में भी अगर आप प्रेगनेंट नहीं हैं तो excess of junk food is bad. And home cooked food सबके लिए ही healthy है. But for pregnancy it is very very healthy and very important. The reason is कि आपने अपने बेबी को एक अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है और दैट इज़ वाई द होम कुक फूड इज़ वेल रिकमेंडेड. एंड यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों को ये फियर होता है दैट दे विल बी आउट ऑफ देयर बॉडी फिगर और वो डिसफिगर हो जाएंगे या वो फैट गेन कर लेंगे तो फिर नॉर्मल फैट जो है वो नॉर्मल बॉडी वेट कब वापस रिटर्न होगा. तो आई नीड टू टेल यू कि आप इस पीरियड को एंजॉय करें
और इसमें अपनी बॉडी फैट या बॉडी शेप के बारे में ना सोचें. But at the same time, you need to understand that a healthy weight gain in the pregnancy, that is in the 9 months of the gestational period, is only 11 kgs from your body weight. The gain of 11 kgs in the whole 9 months is the healthy weight gain. And an excess of weight gain is obviously harmful for your own self, for your baby as well. तो ये भी आपने नहीं करना है कि आप हेल्दी तो खा रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा खा लिया आपने कि आपने इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया दैट यू आर नाउ अगेन एट द रिस्क ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रेगनेंसी में हर चीज़ एक बैलेंस के हिसाब से चलती है. बट येस, समटाइम्स यू डू लूज़ अ कैच और आपसे बैलेंस नहीं हो पाता. एंड इन दैट केस कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो यू ऑल्सो नीड टू गेट योर सेल्फ चेक्ड एट ऑल levels and keep yourself up with your GP and your gynecologist simultaneously, and make sure that at home you are checking your blood sugar levels, your blood pressures if you are known diabetic and known hypertensive, and if not तो भी आप अपने blood pressures और blood sugar level पे at least एक week में एक चार्ट बना लें और एक बैलेंस रीडिंग रख लें जितनी आप रख सकते हैं. एंड ऑब्वियसली फॉर दैट हर बंदा तो मैनुअली चेक नहीं कर सकता एंड अपने नियर बाय क्लिनिक में नहीं जा सकता. सो आइडियली यू शुड हैव योर डिजिटल BP ऐप अलॉन्ग विद योर ग्लूकोमीटर. तो एटलीस्ट आपके घर पे ये दो चीज़ें हों ताकि इन एनी केस यू मस्ट हैव a few readings in the first trimester, in the second trimester and likewise in the third trimester. तो इसके साथ साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बोलूँगी आपको, वो ये दैट प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट जब भी आपको आपके डॉक्टर बताता है कि यू मस्ट अंडरगो मंथली स्कैन्स, you must be on iron supplements and folic acid for the baby's protection and prevention of any neural tube defects. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने पहले दिन से फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन टिल द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द बेबी एंड इवन आफ्टर बर्थ, इफ़ यू आर एनेमिक, अगर आपके ब्लड लेवल्स अभी भी वापस से आपका HB सफिशिएंट नहीं हुआ है, तो you need to make sure that you're taking your supplements, calcium, vitamin D supplements, folic acid and iron supplements. All these supplements needs to be timely taken because ये आपकी ही हेल्थ के लिए ही नहीं, आपकी बेबी की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है. And eat healthy, like I said, do consume fresh leafy vegetables and fruits. Again, do not do any excess कि आप दिन में 3-3, 4-4 मैंगो शेक्स पी रहे हैं. दैट अगेन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. तो लाइक आई सेड कि हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, तो वो बैलेंस आपकी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए. एंड इसके साथ साथ टाइमली आप अपने स्कैन्स करवाएं, टाइमली आस्क अबाउट योर बेबीज़ हेल्थ एंड योर बेबीज़ ग्रोथ. एंड इफ़ द डॉक्टर टेल्स यू अबाउट योर बेसलाइन वर्कअप, तो आपने अपना टाइमली बेसलाइन वर्कअप करवाना है. People with family history would definitely be recommended with an early 20 to 24 weeks के दरमियान आपको early OGTT के बारे में बताया जाएगा. That will also do in the next video where we will cover about the do's and the don'ts of the second trimester. तो first trimester के बारे में हमने यही किया है. To sum up with that, eat healthy, avoid smoking, laxatives and drinking, avoid any overburden, heavy weight lifting exercises. Do not overburdenize yourself in the daily routine as well. Do not do or don't take even excess of emotional stress जो कि आपके बेबी को भी स्ट्रेस करे, because your baby's health is as simple as your own health. जो आप सोचेंगे, जो आप खाएंगे, जैसा आप करेंगे, वो ही आपके बेबी के ऊपर इफ़ेक्ट देगा. सो इफ़ यू स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव एंड हेल्दी, and likewise your baby stays happy, positive and healthy. So it is as simple. And make sure that you like, comment and subscribe to my video. And अब से I will make sure कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा videos बनाऊँ now that I am back with my routine as well. And if you have any queries या फिर कोई भी आपके सवाल हो इसके अलावा, or if you want to know anything else regardless of this video in particular,
You will have my email address in the description box below, along with the link. And that's about it. Thank you so much.